This is module 176 of our course of financial management, and this is our discussion on net present value. This is the second part of our discussion on this topic. Net present value, as we discussed earlier, is the amount that we get in excess of our outflow of cash when we apply a certain discounting rate. नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालते वक्त हम जो डिस्काउंटिंग रेट इस्तेमाल करते हैं वो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, which means that if we want to earn a certain percentage of return from a project, what we need to do is to discount the future cash inflows that will be generated by that project using that discounting rate. And when we sum up all those present values of future cash inflows that will be generated by the project and then subtract the outflow out of it, what do we get is net present value. Now, if this net present value is a positive amount, if it is a certain positive value, that means that the discounting rate has left a certain amount of profit in those cash flows. यानी ये जो फ्यूचर में मिलने वाली कैश इनफ्लोज थी उसको अगर हमने उन तमाम कैश इनफ्लोज को 20% पे डिस्काउंट किया और हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू की एक पॉजिटिव अमाउंट आ गई, लेट्स से 20,000, 40,000, 80,000, तो इसका मतलब है कि इन कैश इनफ्लोज के अंदर 20% से ज़्यादा प्रॉफिट शामिल था. And when we discounted these inflows for 20%, we did not actually eliminate all the amount of profit, and hence we get a positive net present value. That is why we say that when net present value of a project is zero, still we accept that project. And the reason for accepting a project with a net present value of zero is that a zero NPV shows that the project is giving us exactly that rate of return which we want to earn from that project. So, from this we can conclude that the rate of discounting directly affects the net present value. जैसे जैसे हमारा डिस्काउंटिंग रेट बढ़ता चला जाएगा, और यहाँ ये बात याद रखने वाली है कि एनपीवी की कैलकुलेशंस में डिस्काउंटिंग रेट असल में हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट होता है. तो जैसे जैसे हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, डिस्काउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न बढ़ता चला जाता है, वैसे वैसे हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम होती चली जाती है. यानी हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू ज़ीरो होने का मकसद ये है कि हमारा प्रोजेक्ट हमें एग्जैक्टली वही रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइड कर रहा है जो हम अर्न करना चाहते हैं, और पॉजिटिव वैल्यू का मतलब है कि प्रोजेक्ट का रेट हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज़्यादा है, और नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब है कि प्रोजेक्ट का रेट हमारे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से कम है. एंड दैट इज़ वाई we have got the acceptance criteria at zero or positive net present value, and the rejection criterion is only that if NPV is negative. When we have a look at this NPV profile, it shows us that on one side, on the x-axis, we have taken the discounting rate, on the y-axis, we have taken the net present value, which is in rupees or dollars. As we move forward on the x-axis, हमारा required rate या discounting rate जैसे बढ़ता चला जाता है, हम देखते हैं कि वैसे ही वैसे हमारी net present value कम होती चली जाती है. तो ये जो ग्राफ हमारे सामने है, ये हमें बताता है कि discounting rate का ज़्यादा होना हमारी net present value को कम करता है. And we can see that at 20% discounting rate, our NPV is zero. And that is why we say that higher is the discounting rate, lesser is the net present value. Let's see that how net present value is calculated with different rates of return. In this
spreadsheet which is in front of you, you can see that if the rate of discounting increases from 5% to 25% with a 5% increase to 10, 15 and 20%, the net present value actually reduces. In the first case, with 5% discounting rate, our net present value is maximum, that is 21,000, which is a positive value. लेकिन अगर हम डिस्काउंटिंग रेट को बढ़ा के 10% कर देते हैं तो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू कम हो जाती है फ्रॉम 21 to 11,000 and it further falls to 5,000 if the rate goes up to 15 and at 20% it is 0. और ये वो पॉइंट है जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके कि वो रेट ऑफ रिटर्न, वो डिस्काउंटिंग रेट जहां पर हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू 0 हो जाए, दैट शोज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न प्रोवाइडेड बाय द प्रोजेक्ट और इसी को हम IRR का नाम भी देते हैं. बट इफ वी फर्दर इंक्रीज द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वी मूव इनटू द रिजेक्शन रीजन क्योंकि हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव हो गई. सो हम यहाँ पर यूं कंक्लूड करेंगे कि नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोफाइल हमें ये बताता है कि हम अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को कितना बढ़ा सकते हैं और कहाँ पर जाकर हमारे प्रोजेक्ट की वायबिलिटी ख़त्म हो जाती है. सो इफ़ वी आर लुकिंग एट दिस set of data, we can say that this project is viable only up to 20% required rate of return, and anything above 20% will lead to rejection of the project.